Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great God and great Vaheguru, let us start our new unit. That is the force and motion. Okay. आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड मोशन. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्स एंड मोशन, we would like to discuss the basic terms. The very first basic term is what do you mean by scalar quantity? Scalar quantities क्या हो? What are scalar quantities? What are scalar quantities? Scalar. Definition. What is the definition? The quantity having only magnitude. स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? वो क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. द क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, Can you give me the example of scalar quantities? क्या आप एग्जांपल बता सकते हो? कोई उदाहरण क्या है इसकी? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज? बताइए कौन कौन सी है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज? यस, वेरी गुड. एरिया, वॉल्यूम, मास और कोई भी स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस, स्पीड, एटसेट्रा. बहुत सी टर्म्स हैं. देयर आर many terms, many quantities which are called a scalar quantity. But the basic is that the quantities which has only a magnitude, but no direction, so those quantities are called scalar quantities. Okay, any doubt? हिंदी वालों को समझ आया सबको? Yes sir. Okay, next I would like to discuss the what is by vector quantities. Vector quantities क्या होती है? जिसका क्या था? quantities which has a magnitude as well as a direction. Magnitude and direction both. Magnitude plus direction. Magnitude plus direction. ठीक है, वो quantities जिनका magnitude भी होता है, direction भी. Magnitude का मतलब quantity. Magnitude means quantity. अगर mass है तो mass होगा, length है तो length है. Okay, that are called a magnitude. What are the examples of vector quantities? Displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. Okay, yeah. Comma, दूसरी velocity is also a vector quantity. Velocity. Next, force is also a vector quantity. Next, acceleration. 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 Okay, these all are basic. These all are quantities are called vector. Any doubt? Let us. I'll take the examples of displacement. Okay. Now see. For example, this is point A. This is point B. Okay. And see how the vector quantities are represented. Okay. That I want to tell you कि vector quantities को कैसे represent किया जाता है. Let us say this is point A, this is point B. Okay. And let's say that the distance between A and B is 5 kilometers. 5 kilometers. A point can be taken as home, and B point is taken as college. B point is taken as a college. You start your journey from home and you end your journey at college. आप घर से कॉलेज आते हो, फिर कॉलेज से you start your journey from home to college, then college to home. Okay. What is the total journey?
Total journey is ordinary distance. The total journey is ordinary distance. The total journey is AB plus BA. AB plus BA. What is AB? 5 kilometer. What is BA? The answer is 5 kilometer plus 5 kilometer is equal to 10 kilometer. So this is called a distance. This is called a distance. Only AB represents the magnitude. Only AB represents the magnitude. हिंदी वालों को समझ आ रहा है? हिंदी वालों को समझ आ रहा है? जोर से बोलो, आ रहा कि नहीं आ रहा? जोर से बोलो यार। सारे बोलो, समझ आ रहा है? ठीक है। जो सिंपल, हाँ जी, नहीं आ रहा? तो ध्यान से देखो। जो सिंपल AB है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर। सॉरी, स्केलर। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्केलर। मतलब सिंपल AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है। अगर मैं AB के ऊपर वेक्टर डाल दूं, दिस एरो, अगर मैं AB के ऊपर ये एरो डाल दूं, if I insert a arrow on the AB, then this is called a AB vector. This is called a AB international. Okay, this simple AB represents magnitude. This simple AB represents magnitude. I mean to say this is a scalar quantity. This is the distance is scalar quantity. But if I put arrow on AB, then it becomes a vector quantity. It becomes a vector quantity. AB vector means this vector represents, see, simple AB represents magnitude, and this arrow represents a direction. Okay. Now this AB vector represents a displacement. This AB vector represents a displacement. Okay. This is distance, but if I put arrow on AB vector, then it becomes a displacement. Simple AB distance है. अगर AB के ऊपर मैंने arrow डाल दिया तो वो क्या बन गया? Vector. AB का मतलब क्या है? What is the meaning of AB? AB means initial point is A and final point is B, and direction is from point A to point B. If I put BA vector, now see, AB vector is in this direction and BA vector is in this direction. BA vector means simple BA represents magnitude and arrow represents direction. So BA vector represents it will move from point B to point A. So its direction is opposite to the AB vector. समझ आई? BA की डायरेक्शन क्या है? उल्टी है। AB से क्या है? Are you getting the point? Sylvester, Cindy, this BA vector points from point B to point A. This AB vector represents point A to point B. This BA vector represents point B to point A, and both the directions are opposite. So I can say AB vector is equal to minus BA vector. Any doubt? शंका AB वेक्टर की डायरेक्शन और BA वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? उल्टी है। AB वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ, और BA वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। तो दोनों डायरेक्शन क्या होगी? क्या हो गई? ऑपोजिट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस BA वेक्टर। Now calculate the total displacement. Okay, what is total displacement? Displacement is AB vector plus BA vector. Displacement is AB vector plus BA vector. So let us say this is equation number 1, this is equation number 2. Use 2 in 1. Use 2 in 1. So the displacement is AB vector. What is BA vector? BA vector is equal to minus of AB. So what is total displacement? Total displacement is 0. Are you getting my point? Total displacement क्या हो गई? I mean to say if you move from home to college and then college to home,
or we can say hostel to college, college to hostel. What is your total displacement? 0, but the distance is 10 km. Distance is are you getting my point? अगर आप घर से कॉलेज जाते हो और कॉलेज से घर जाते हो तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ इस एग्जांपल में? 10 किलोमीटर। कितना हुआ? 10 किलोमीटर। बट आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0 हो जाए, क्योंकि जितना आपने डिस्टेंस इस तरफ ट्रैवल किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट में उतना ही वो माइनस हो गया, तो AB माइनस AB वेक्टर क्या हो गया? 0। तो इट मींस दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, हो जाए। इसीलिए दैट इज व्हाई डिस्टेंस इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ आया सबको? बताओ समझ आया भाई? सारे बोलो भाई, जोर से बोलो, समझ गया? ठीक है। नाउ आई विल गिव द एग्जांपल। ये बताइए ये क्या है, स्केलर है क्या वेक्टर है? दिस CD, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी मैंने एरो डाल दिया, क्या बन गया? वेक्टर। और CD वेक्टर किसके इक्वल होगा? CD वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ DC, माइनस ऑफ DC। ओके, बिकॉज़ CD की डायरेक्शन इस तरफ होगी तो DC की इस तरफ होगी, अगर CD की इस तरफ होगी तो DC की। ओके, आई गेटिंग माय पॉइंट? So that is why this is very important. आपको you have to know that difference between scalar quantity and vector quantity. आपको scalar quantity और vector quantities के बीच में जो क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, ठीक है? समझ आई? अब जैसे फोर्स है तो हमको कैसे पता चला फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है? How we come to know about that the force is vector quantity? Now see what is the force? Formula of force is mass into acceleration. This acceleration is vector quantity. Acceleration is a vector quantity. And what is law of homogeneity? If this is vector quantity, this will also be a vector. See, mass is scalar. Mass is a scalar. Scalar multiplied by vector is equal to vector. So this vector is equal to vector. Vector is equal to vector can never be equal to scalar. Are you getting the point? समझ आई? होमोजेनिटी क्या बताता है? स्केलर के आगे स्केलर होगा, वेक्टर के आगे ऐसा नहीं होगा कि स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर होगा या वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर होगा। इट शुड नॉट बी हैपन। सिल्वेस्टर, गेटिंग अ पॉइंट? सिद्धि, समझ आ रहा है हिंदी वालों को? समझ आ रहा है ना सभी को? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर, ठीक है? अभी हम करते हैं, अभी हम वेक्टर्स पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वी हैव टू पुट एरो, वी हैव टू पुट एरो। ओके, सिंपल AB represents magnitude and arrow represents direction, and vector means magnitude plus direction. And scalar means only magnitude. Scalar means only. So, can I have this? Okay. Yeah. कर दो आपने? हाँ ये सर। अब ये वाला किसी और से बोलेगा। अब ठीक है तो ना डोनट है। हाँ जी, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नाउ प्लीज कीप क्वाइट। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हो गया? लेट अस से अगर दिस P is in this direction, direction will be opposite. Direction will be, so these two vectors are called a negative. Okay, so this is P, this is a minus P. This is P, this is a,
only difference is direction is opposite. Direction is and what are equal vectors? अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो. If the magnitude and direction both are same, if the magnitude direction both are same, okay. जगह नहीं है वहाँ पर बैठ सकते हैं. Okay. If the magnitude and direction both are same, then these two vectors are called equal vectors. These two vectors are called equal. Third, most important, unit vector. भाई unit vector क्या होगा? ठीक है. This is most important. What do you mean by unit vector? It's simple as a cap. This cap represents a unit vector. This cap represents a unit vector. So a cap is equal to vector divided by its magnitude. Vector divided by its magnitude. Or a vector is equal to a because a vector is equal to a. So a vector is equal to a cap is equal to a by. What is unit vector? Vector divided by its magnitude. So I will write a cap is equal to vector divided by magnitude of vector. Magnitude of vector. And magnitude of unit vector is always a unity. Magnitude of unit vector is unity. ठीक है. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है. यूनिटी मींस 1. यूनिटी मींस 1. ओके. द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी. ओके. और हमारे 3 डायमेंशन में दिस इज x axis. This is a rectangular system. This is x axis. This is y axis. This is z axis. x axis पे जो अलाउंड होगा वो i कैप होगा, y axis पे जो अलाउंड होगा वो j कैप होगा, और z axis पे जो अलाउंड होगा वो क्या होगा? k कैप. वो क्या होगा? k कैप. ओके. नाउ I will tell you about the much more information. I want to give you the much more information on the unit vector. Okay. How to calculate the unit vector? Unit vector है क्या और उसको निकालना कैसे? ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल I have let us see मेरे पास एक वेक्टर है बेटा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3j कैप. वीडियो पे ठीक है. ये क्वेश्चन है. वो कहेगा कैलकुलेट a कैप. कैलकुलेट दी a कैप. ठीक है. a कैप निकालो इसका. मैं इसका यूनिट वेक्टर इसका कैसे निकालेंगे? नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड. वी विल फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड. हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता है आपको? ए का आपका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप? 1 स्क्वायर प्लस व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ जे? 2 स्क्वायर. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ के कैप? -3 स्क्वायर. व्हाट इज द आंसर? 1 plus 4 plus 9, so root square root 14. So the magnitude of a vector is equal to a is equal to root 14. And what is unit vector? Unit vector is equal to a vector divided by its magnitude. कितना आंसर है? I cap plus 2j cap minus 3k cap divided by square root 14. और 1 by square root 14 i cap plus 2 by square root 14 j cap minus 3 by square root 14 k cap. This is also ठीक है. समझ आया आपको? Are you getting this? ये डिवाइड हो गया. रूट 14 इसके साथ भी डिवाइड हो गया, इसके साथ भी डिवाइड हो गया, इसके साथ भी डिवाइड हो गया. समझ आया? एनी डाउट? दोबारा समझाता हूँ आपको. आपने पहले कैलकुलेट किया कभी मैग्नीट्यूड?
किया क्या पहले कैलकुलेट। तो सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू जो i कैप का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर का स्क्वायर। तो आंसर कितना आया स्क्वायर रूट 14, स्क्वायर रूट 14 तो डिवाइड कर दिया। व्हाट इज डेफिनेशन, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो दिस इज वेक्टर, दिस इज a वेक्टर, दिस इज a वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा स्क्वायर रूट 14 क्या हो गया, सभी के साथ क्या हो गया डिवाइड, सभी के साथ क्या हो गया। एनी डाउट, एग्जांपल आउट करते हैं। फोटो मान लीजिए मेरा ए वेक्टर है, मेरा ए वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, कैलकुलेट ए कैप, कैलकुलेटर ए कैप। तो क्या आंसर आएगा इसका, व्हाट इज द आंसर, इसका क्या आंसर आएगा। सर मैं करूं? सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, निकालो इसका मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट्स द कोएफिशिएंट ऑफ i कैप -1 स्क्वायर प्लस j कैप प्लस 1 +1 स्क्वायर माइनस 1 -1 स्क्वायर। So the answer is 1 plus 1 plus 1 square root 3 root what is a cap, a cap by definition a cap is equal to a vector by a, so this is a, this is a vector is magnitude of a vector is nothing but a, magnitude of a vector is nothing but a. So vector divided by its magnitude, the answer is minus I cap plus j cap minus k cap by square root 3, so minus 1 by square root 3 I cap plus 1 by root 3 j cap minus 1 by root 3, so this is answer. Any doubt? सिंपल है, मुश्किल है कोई, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है नहीं। खींच लो फोटो। अच्छा अभी अगर मैं आपको कहूँ कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ ए कैप का, बता सकते हो ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, फोटो ले। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप कितना आएगा बताओ, क्या आएगा, वही फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ इसका है ना, क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 बाय रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 बाय रूट 3 का स्क्वायर। तो कितना आंसर आया, ये क्या है इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, तो इसका कितना आंसर आ गया, इसका आंसर लिया सर 3 3 1 प्लस 1 प्लस 1, सर आंसर होगा 1 3 बाय 3 1 रूट अंडर 1। स्क्वायर रूट 1। यस सर हमने आपको क्या कहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज आ यूनिटी। क्या होता है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, यूनिटी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं यूनिटी, UNITY, यूनिटी मींस 1, यूनिटी मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, बोलिए आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलिए द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, ठीक है, हमेशा 1 होता है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और करके बताइए ना, लेट अस से a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आया। व्हाट इज a कैप, सर वी विल व्हाट इज a कैप, कितना आया, मैग्नीट्यूड कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो व्हाट इज a कैप, सर रूट अंडर 6 और अंडर रूट, so a cap is equal to a divided by 8, 2i cap minus j cap
plus b divided by root of this is the any doubt? नो सर समझ आया? सबको समझ आया? आगे बात करते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। कोइनिशियल वेक्टर्स अच्छा, को का मतलब क्या होता है? कोइनिशियल को का मतलब क्या होता है? को का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? को मींस इकट्ठे। को मींस इकट्ठे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ को इन इंग्लिश? इन्वेस्टर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ Together. को? को मींस dash. Together. Okay, together. Ko means together. Okay. Now see, initial means, what's the meaning of initial? Starting point. तो को इनिशियल वेक्टर कौन से होंगे? इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सेम। इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? द वेक्टर्स व्हिच आर द सेम स्टार्टिंग पॉइंट और सेम इनिशियल। फॉर एग्जांपल, this is A vector, this is B vector, this is C. So these are called co-initial vectors. These are called co-initial vectors. Now see, all the vectors have the same initial point. Yes, sir. All the vectors are starting from the same point, that is pointer to point which is called the initial point. A vector, B vector, C vector, D vector, this and O is called the initial point. And out. सभी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम। क्या है? सेम। जैसे आपका सभी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हॉस्टल क्या है? हॉस्टल से आते हो ना? तो हॉस्टल क्या हो गया आपका? स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट हो गया। सेम है ना सभी का? तो आप भी सारे हो गए को इनिशियल। आप भी क्या हो गए सारे? को इनिशियल स्टूडेंट्स। को इनिशियल आई गेटिंग अ पॉइंट? अलग अलग होता है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, फिर को इनिशियल नहीं। कोई घर से आ रहा है Any doubt? अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स Are in same linear. Path are same but distance is different. two vectors having equal or unequal magnitude but they are acting along the same line. They are acting along the same line. दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। गेटिंग अ पॉइंट? बट दे आर एक्टिंग along the same line. They are acting along the same line or parallel line. Same line or parallel line. So these two vectors are called collinear vectors, and these two vectors are also called collinear vectors. Okay. These two vectors are also called collinear vectors. तो लिख लो two vectors, लिख लो definitions की, ये important है। Two or more vectors, this is important. Two or more vectors having equal or unequal magnitude. Two or more vectors having equal or unequal. सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग अलोंग सेम लाइन और पैरेलल लाइंस। एक्टिंग अलोंग सेम लाइन और पैरेलल लाइंस। Acting along the same line or parallel lines are called collinear vectors. Collinear
Now see, what's the meaning of co together? Parallel lines. Region means line. Line. Same line. Parallel lines. Two or more vectors having equal or unequal magnitude acting along the same line or parallel line are called collinear vectors. These are examples. These are the examples. जीरो वेक्टर क्या होता है? Zero vector. जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? Zero. Zero vector means which has a zero magnitude, which has a zero magnitude and arbitrary direction. Arbitrary direction. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो. मतलब वो जहाँ से चला वहीं से करना. ओके, तो ये जीरो वेक्टर है having zero magnitude and arbitrary direction. Zero magnitude and arbitrary direction. This is called a zero vector. This is called a zero. एंड आउट जीरो वेक्टर पता लग गया, ये जीरो जो क्या है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वो भी जीरो हो गया. डायरेक्शन क्या होगी? आर्बिट्रेरी. डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी मींस एनी डायरेक्शन. अब हम बात करेंगे वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर. वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर. लेट अस से these two vectors are in same order. Yes. जहाँ पे एक वेक्टर खत्म हो रहा है वहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट स्टार्ट हो हो रहा रहा है. है. I need to say एक ही डायरेक्शन, either एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. Clockwise. तो ये किस में चल रहे हैं अभी? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. कैसे चलेंगे? Vectors are in same order. Vectors are in a same order. Okay. Vectors are in opposite order. ये क्या है? ये क्या ऑपोजिट ऑर्डर? ये क्या है? ये क्या है? ऑपोजिट. ये वाला वेक्टर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. ये वाला वेक्टर क्या है? क्लॉकवाइज. So these two vectors are in same order. These two vectors are in opposite. समझ आया? एंड आउट. लास्ट में हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर. This vector R is called resultant vector. I mean to say whatever the जो A और B मिलके net effect दे रहे हैं वो मिला R दे रहे हैं. So R is called a resultant vector. R is called a resultant vector, and this R vector will be equal to A vector plus B. Any doubt? Any doubt regarding this section? International. हिंदी वाला को समझ आया? Yes, sir. Which one? अब देखो A और B का सेम ऑर्डर है. इस आपको बोलते हैं ऑपोजिट ऑर्डर में, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. जो A और B मिलके जो इनका इफेक्ट होगा वो किला आता है. So I mean to say R is equal to A plus B. R is equal to A plus B. Because it is a resultant. Resultant means addition, sum. Resultant means a sum or addition of two vectors. Okay. Any doubt? No, sir. Thank you. Thank you.